हाँ दोस्तों, अब हमारा सेकंड लेक्चर है, वो भी आर्टिकल्स पर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया अबाउट आर्टिकल्स। दे आर डिटर्मिनर्स, दे आर यूज्ड विद नाउन एंड नाउन मैंने बताया था काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, उसके दो फॉर्म्स हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन वी डज नॉट हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। देयर वी डिस्कस द फर्स्ट रूल ऑफ एन। एन में मैंने आपको बताया वी यूज एन फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर अ सिंगुलर नाउन, बट व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज रिपीटेड इट बिकम्स पर्टिकुलर एंड वी यूज द बिफोर इट। सो मैं ऐसे दिखाऊंगा सेम एग्जाम्पल अगेन। आई सॉ डैश बॉय, वी राइट आई सॉ ए बॉय। इसी तरह मैंने बताया था आपको आई एट डैश एप्पल, तो व्हाट वी राइट आई एट एन एप्पल। लेकिन याद रखना आर्टिकल आर यूज्ड और एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मीन्स एडजेक्टिव प्लस नाउन। इफ वी हैव अ वर्ड गुड बॉय, good boy is noun phrase, good is adjective, boy is noun, so I can write here a good boy. He is a good boy, he is a boy. He is a good boy, so it is noun phrase. Good boy, it is plural is good boys, so यहाँ मैं लिखूंगा he is a good boy. If I write he is dash boy, तो he is a boy. अगर आपको नाउन फ्रेज या नाउन सिंगुलर हो, पहली बार यूज हो रहा है, तो वी यूज ए और एन बिफोर इट। वो आपको पता है ए कब करते हैं यूज, एन कब करते हैं यूज। व्हेन सिंगुलर नाउन इज इनिशिएटेड विद वॉवेल साउंड वी यूज एन बिफोर द नाउन, एंड व्हेन सिंगुलर नाउन इज इनिशिएटेड विद कंसोनेंट साउंड वी यूज ए बिफोर द नाउन। वो मैंने आपको बताया जब भी प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए सिंगुलर नाउन स्टार्ट्स विद अलिफ और अलिफ जबर अलिफ जीर, then the noun is initiated with vowel sound, there we use an, and if it starts with other than alif, b, p, t, किसी से भी, then its initial sound is consonant, then we use a before it. और हिंदी में अगर अ, ई और उ से स्टार्ट होगा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन तब यही क्या होगा vowel, तो then we use an before it, other than we use a before the singular noun. तो पहला जो हमने बताया कि we use a or an before a singular noun when it is used for the first time. Now see rule number second. मैंने आपको बताया we don't use a or an before uncountable noun. With some exception मैंने आपको बताया था। अब ये countable बन गए, लेकिन आप देखो noise, N-O-I-C noise, lie, L-I-E lie, fuss, F-U-S-S fuss, hurry, H-U-R-R-Y hurry. These are the nouns before them we use a, क्योंकि ये सब कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। नॉइज, न, लाई, फास्ट, हरी, तो इनके सामने when they are used before a noun for the first time, याद रखना, then we use a before them. For example, मैं लिखूंगा don't make dash noise, don't make a noise. Try to understand. Dash lie has no legs to stand upon. Dash lie has no legs to stand upon. A lie has no legs to stand upon. See, if I write he is in dash hurry, so he is in a hurry. He is in a hurry. Otherwise, hurry is uncountable noun. But I just told you that with some, मैंने आपको कल भी बताया था with some exceptions. So see, he is in a hurry. But अगर मैं अब आपको पता चला कि अगर हमें noise है, lie है, fuss है, hurry है, तो इसके सामने article लगता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने बताया ना, we use a before hurry, before noise, before. If I give you a sentence, do hurry, so what to write here? Do you write here a or an? No, here we use zero article. Why we use zero article? Can you tell me? Yes, very good. Because hurry is not here noun. Hurry has been used here as a verb. Do hurry. As I told you that articles are used before noun or noun phrases. Hurry here is verb. Before verb we cannot use article. Therefore here we use zero article. Do hurry. We cannot write do a hurry. Because before verb you cannot use article or an. Okay. Now write down rule number next. We use
although you can write like this, although we don't use a or an before uncountable nouns. As I told you in my previous lecture, मैंने आपको अपने previous lecture में बताया कि हम a before uncountable noun use नहीं करते हैं. we cannot write there is a sand. आप नहीं लिख सकते हैं there is sand. आप समझ रहे हो? I drank dash water. You cannot write I drank a water. I drank water. But so although we don't use a or an before uncountable nouns, हम a and uncountable noun के साथ use नहीं करते हैं. But we use a and before uncountable nouns when they are used in this structure, which I will tell you here. See, अगर ऐसे हम लिखेंगे, मुझे है ना sand. Instead of sand, if I write grain of sand. For example, water. If I write glass of water, glass of water. We have, for example, wheat. If I write grain of wheat. See, sand is uncountable. But if I write in this structure, particle of sand, it becomes countable. Particle of sand, particles of sand. Glass of water, glass of water, glasses of water. Grain of wheat, grain of wheat, grains of wheat. आप समझ रहे हो? Particle of dust. Dust is what? Dust is uncountable. But if I write particle of dust, particles of dust, that means at that time we use a or an before this structure, depending upon the initial sound of this structure or initial sound of this compound word. आप समझ रहे हो? तो जब भी हमें ये क्या इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, उस तरीके से हम लिखेंगे, उस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, वहां जहां ये क्या बन जाएगा, ये काउंटेबल, दैट टाइम वी यूज आर एंड बिफोर इट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. मिल्क है मुझे, मिल्क इज अनकाउंटेबल, बट इफ आई राइट गिलास ऑफ मिल्क, गिलास ऑफ मिल्क, it becomes countable. Glass of milk, glasses of milk. So here I write or and before it. For example, I write here, he gave me dash milk. So what I write? He gave me milk. Because milk is uncountable noun. Before milk, you cannot write or and. But if I write, he gave me dash he gave me dash glass of milk. Glass of milk. I write here, he gave me a glass of milk. You understand this? So, when a countable, uncountable noun is written as structure, where it becomes countable, at that time we use a or and before it. Okay. Now, in my next rule, in my previous lecture, first I would like to clear what I told you in my previous lecture. मैंने वहां आपको बताया, when singular noun is used for the first time, we use a or and before it. But मैंने फिर आपको वहां example एक दी थी. This is my dash cap. Here noun, singular noun has been used for the first time. Cap. Cap, caps. But I write here zero article. I don't write here a or an. Why don't I write here or why don't I write here article as per the rule? As I have already told you that when a singular noun is used for the first time, at a time we use a or and before it. See, what is the reason? As I told you in my previous lecture, that articles, they come in the family of, they belong to the family of determiners. Articles are determiners. मैंने उसमें आपको बताया, in determiners we have articles and we have possessive adjectives, like we have my, we have our, we have your, we have his, we have her, we have its, we have their, we have some, many, any, none, 1, 2, 3, 4, 5, first, second, third, fourth, and we have all adjectives. कोई भी adjective जो noun के सामने होगा वो determiner है. आप समझ रहे हो? तो इसमें आप लेकिन वहां मैंने और एक चीज आपको बताया था. All determiners are adjectives, but all adjectives are not determiners. Try to understand. देखो यहां मैंने बताया जो adjectives है, ये adjective. For example, good. For example, tall. For example, rich.
they can be used without noun sometimes. For example, मैंने आपको वहां एग्जांपल दी थी, he is tall. He is tall, here tall is not determiner. आप समझ रहे हो? तो यहाँ बच्चों को समझाने के लिए मैं क्या कहता हूं, ये जो डिटर्मिनर्स हैं, and, the, my, our, your, his, her, it is, there, they are never used without noun. They are always determiners. They are always determiners. ये हमेशा डिटर्मिनर होते हैं, ये कभी नाउन के बगैर यूज नहीं होते हैं. लेकिन जो एडजेक्टिव्स है, these adjectives are used sometimes without noun, so they are not always determiners. ये जो determiners हैं which are used always with noun, इनको मैं कहता हूं भाई. अपनी जगह मैंने ये समझाने के लिए कहा है, ये आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, they are भाई. ये जो विदाउट नाउन भी कभी यूज होते हैं अदर एडजेक्टिव्स, दे आर बहनी. इनको मैं कहता हूं दे आर सिस्टर्स, दे आर ब्रदर्स. सी, आपको पता है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है, जब मैरिज होती है, तो भाई जब अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट. सी, वहां प्रॉपर्टी वगैरह होता है, तो भाई को भाई पसंद कभी नहीं आता है. लेकिन बहन इज ऑलवेज वेलकम. Sisters with some exceptions. Sisters are always welcome. यहाँ भी हमें कुछ exceptions हैं. Some many which can be used without sometimes just noun, but they come in this family determiners. तो अगर मैं कहूँगा तो इनके बारे में जो भाई है, इनके बारे में लिखता हूँ कि we never use two determiners at a time. देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा. अगर मैं कहूँगा he is my dash friend. friends मैंने ए फ्रेंड लिखना था, लेकिन अब जब मैं ए लिखता, ए इज डिटर्मिनर, माई इज डिटर्मिनर, लेकिन कौन है भाई? वो भाई, ये भाई इसको कह रहा है, वो यहां क्या करने आए हो, दबा जाओ, गेट आउट. सो मैं नोट लिखूंगा, वी डोंट यूज टू डिटर्मिनर्स. वी कैन नेवर यूज टू डिटर्मिनर्स एट अ टाइम. दैट इज वाई वी डोंट राइट हियर ही इज माई ए फ्रेंड. वी हैव टू राइट हियर ही इज ए फ्रेंड, और वी हैव टू राइट ही इज माई फ्रेंड. अब अगर मैं ऐसे कहूंगा, ही इज डैश गुड बॉय, ही इज डैश गुड बॉय, यानी कहूं मैं ही इज ए गुड बॉय. आप कहोगे सर यहां गुड ये भी डिटर्मिनर है, बिकॉज इट इज यूज्ड हियर बिफोर नाउन. ये तो अब नाउन फ्रेज बनता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन. अगर खाली एडी होगा वो भी एड नाउन फ्रेज है. लेकिन अब मैंने आपको बताया ना, दीज आर द डिटर्मिनर्स विच कैन बी यूज्ड विदाउट नाउन. एट द टाइम दे डोंट एक्ट एज ए डिटर्मिनर्स. सो ये बहने हैं. मैं कहता हूं जो भाई हैं उनका मैं कहता हूं दोज डिटर्मिनर्स दे आर नेवर यूज्ड टुगेदर. वो कभी टुगेदर यूज नहीं होते हैं. दैट इज व्हाई we here write he is my friend, or we write he is a friend. We never write he is my a friend. You understand? Raman, Professor Raman never gave up his dash traditional turban. See beta, traditional turban, it is noun phrase. तो मैं a traditional turban. लेकिन यहाँ his है, his and a, दो determiners. We can never use two determiners at a time. That is why I don't write here a. I write here Raman never gave up his traditional turban, or we can write Raman never gave up a traditional turban. You understand? So far what we have discussed rules of and. I told you that we use and before a singular noun when it is used for the first time. But when a singular noun is repeated, it becomes particular and we use that before it. We never use and before plural noun or uncountable noun. But when uncountable nouns, when plural nouns are repeated, they become particular and we use that before them. And second rule, I told you that we use a or an before nouns like noise, lie, fuss, hurry. You understand? Yes. And now we'll discuss next rule. See better. Next rule of and. You write down. We use and to show what somebody is or what somebody does. Or we use and to show what something is. Say for example, yaad rakhna, I repeat it. We use and to show what somebody is or what somebody was or what somebody does. We use and to show what something is. You understand? Or what something was. For example, अगर मैं ऐसे लिखूंगा Raman, or simply I will give you a simple example. I
am dash teacher. So what I am a teacher. I am a teacher. You understood? She is dash doctor. So she is a doctor. One more question, or a question which may arise in your mind. That is, sir, you just told us that when a singular noun is used for the first time, we use are and before it. Then what is the need of showing this rule? क्या जरूरत है ये rule दिखाने की? ये already teacher, doctor, doctors. That you will come when we start this usage of the. ये आपको उस वक्त जरूरत लगेगा. For example, अगर मैं कहूँगा it is dash university. What something is? It is a university. आगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे मैं दिखाऊंगा किसी जगह यूनिवर्सिटी के सामने जीरो आर्टिकल आएगा, किसी जगह यूनिवर्सिटी के सामने द आएगा और किसी जगह यूनिवर्सिटी के सामने आएगा. When we use a before university, when we use that before university, when we use zero article before university, don't worry, you will never be confused. All these confusions will get clear to you. Once you stay with me, you keep watching my lectures. And one more thing which still I have to tell you, that is why we use sometimes waters. है why we use at some places sands. या मैंने आपको बताया we never use or and before uncountable noun. लेकिन people nation is strong with men. Only brave men can make a people great and strong. We can never use a before people because people is uncountable noun. Why their point has used a before uncountable noun? That you will understand. Keep watching my channel, subscribe my channel, and inshallah all these confusions will get clear to you and you will get command on the grammar. Thank you.